we go again. Right, namaskar. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। और हम दोनों हैं आपके साथ। कहां पर? नेशन नाउ पर, जो है हमेशा आपके साथ, नेशन नाउ पर। प्रदीप जी, आज नरेंद्र मोदी जी आए, 2 वंदे भारत ट्रेन उन्होंने फ्लैग ऑफ करी। उसके अलावा बोहरा कम्युनिटी की एक नई यूनिवर्सिटी ऑफ हायर लर्निंग इन अरेबिक, उसको इनॉग्रेट किया। The Bohras of course have always been very loyal to Mr. Modi right from day one, and he's been very fond of them. I still remember he especially pointed out the Bohris at the Madison Square Garden meeting when he had just become prime minister, when he had gone to the US. उसके अलावा what really impresses me personally और मेरे लिए बड़ी और आपके लिए भी बड़ी संतोषजनक बात है, yes, वो है कि हमारे ऑफिस की खिड़की के बाहर से जो हम देखते थे, हमारी ऑफिस की खिड़की से 2 फ्लाईओवर्स, वो जो 2 फ्लाईओवर वो 2.5 साल से बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़े थे। एग्जैक्टली अरे वो 6 महीने में बन गए। एग्जैक्टली, फैंटास्टिक। आई मीन दिस इज अमेजिंग। द एंटायर जो एक कंजेशन बन गया था बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, 5000 व्हीकल्स एट अराउंड 5 to 8 was stuck up in every road of BKC moving out and coming in. लेकिन प्रदीप जी 6 months, 6 महीने में, yes, इसका मतलब क्या हुआ? There it is, there it is. All the roads are free. Just look at that flyover. That's the most wonderful sight. And the other one, the Kalina BKC, Kalina Kurla flyover. प्रदीप जी, you ease the entire traffic out there. मेरे लिए ये सबसे संतोषजनक। Exactly sir. This is beautiful. बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या हुआ साहब? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बन सकता था। Yes. जान करके बनाया नहीं गया। Exactly. कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल सर। 2.5 साल से 2 साल 7 महीने से जान करके रोका गया, इसका मतलब ये हुआ। This is the perfect example of that. Now, what was going on? This is terrible. Now, what Mr. Modi, what Eknath Shinde, Dev Fadnavis is doing is for everybody to see. We can see it out of our windows, and we see out of our office window. Yes, and we see the flyovers out there, traffic congestion. And earlier, when we should look out of the window, it was all traffic everywhere, moving at snail pace or below snail pace. And now look at the flyover come, you got ample roads, ample space, it's so treat to watch. ऐसा था, and I speak for everybody who has an office in the business district in the northern suburbs, that is the Bandra Kurla complex. Everyone but everyone used to rush out of the office so that they could catch either the early train or early something or the other, not to be caught in that traffic snarl. Let me tell you, this is going to come as a huge relief to just about everybody. Big relief. Absolutely big relief. It is for something to see. You can see development. You can see things happening. You can see below, just outside. You can open your eyes. You can see development. That is something what they have done, and we have been watching this from the past and 2.5 years, 3 years continuously. That these flyovers is just lying dormant. अरे हम वो एक पिलर बना करके बस छोड़ दिया था। वहां पर और कुछ नहीं हो रहा है। Yes. हम आपस में बात कर रहे हैं, देखने में क्या गया ये 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। और यकदम जैसे जादू की छड़ी हो 6 महीने के अंदर Wonderful. Is complete. Absolutely amazing. Now at the moment with us, how are you going to beat this? How is the other parties going to beat this? I don't think the other parties are relevant anymore. It's over. इस वक्त हमारे साथ हैं मक्खन नार्वेकर साहब, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के। नार्वेकर साहब नमस्कार। नमस्कार। राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ, यानी RKB from Nation Now. Look at that. This is so lovely. Even your lighting is lovely. Your face is showing up so beautifully. You seem to be very happy, Mr. Narvekar. You seem to be very happy. Well, actually, I am also very happy. Pradeep Bhai is also very happy that you know the 2 flyovers that Mr. Modi has inaugurated today, they affect us personally. And personally, let me tell you this very frankly, we thank Mr. Devendra Fadnavis, Mr. Shinde and Mr. Modi for getting these flyovers on the road, for just inaugurating them. You know, for the last 3 years, they were just stuck up. 2.5 years, no work was going on. 2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ साहब। 6-7 महीने के अंदर दोनों फ्लाईओवर बन गए और उद्घाटन भी हो गया। नार्वेकर साहब।
See, the smile on my face reflects the sentiments of the entire city today. Yes. And believe you me, if it is not just the flyovers, yes, I Yes. completely agree with you that where there's a will, there's a way. Yes. And had there been any will, those flyovers would have been completed long back. Yes. But besides these flyovers, I would say it is not just the flyovers, it is every project. You name the project that was started in the erstwhile Devendra Fadnavis's government, and if you compare it, look at the state of those projects in the 2.5 years of MVA government, it was deplorable. Whether it was the metro, whether it was the coastal road, whether it was the Trans Harbour, these projects were on time. But in those 2.5, 3 years, the entire city has witnessed what has happened. So I would say it is definitely a very, very big day for Mumbaikars today. And likewise, I'm sure in the days to come, where we'll see like Vande Bharat trains that were inaugurated today. I'm sure there are many more such projects like our Honorable Chief Minister said in his speech today. Fantastic, absolutely fantastic. Now, how is the opposition going to fight this? I don't even know how these guys are going to fight this, and what is the explanation that they're going to give for all the delays in all the projects? There's the coastal road, there's the Trans Harbour link, then there is the metro. You got 12 lines of the metro which have now been increased to 14. It's absolutely fantastic. And then you have the new Goregaon Mulund Road connector, which is amazing, really and truly. And I believe Mr. Shinde has assured just about everybody, and so of course has Mr. Devendra Fadnavis, that these projects are not only going to be completed on time, they'll be completed before time. And with the Prime Minister himself making a commitment towards the city of Mumbai, I believe it. I've seen it myself. I absolutely believe it. So what do you think these guys are going to come at you with? See, I don't think the opposition has any faith. They may oppose for the sake of opposing. Yes. But if you see today that I would give it to them had they showed me even one project that they have initiated or Yes. even proposed in Yes. the 2.5 years or 3 years of regime that they were in. But they have absolutely nothing besides talking about proposing to glorify Yaqub's grave or Hiren murder or purchase of Dawood Ibrahim's properties, Sachin Wajee scam, the potholes on the road, the corruption that was there in the Nala Safai. These are the kind of projects that I think the erstwhile regime has reflected and Mumbai has had to suffer. Vis-a-vis, if you see today, 17 projects were inaugurated by the Honorable Prime Minister when he came here last. Yes. Today also, if you see, it is absolutely a golden era for Indian Railways, for Mumbai, I would say, that has begun. So I think the opposition, if you ask me, they have nothing really concrete, or I don't think besides loose statements and gaping in the air. I don't think that there's any much of the opposition that they have to say. And the best part about the Vande Bharat train is that they're all made in India. They're all made at the coach factory in Chennai, and they're all electrical trains. And above all, I believe the kind of facilities that have been provided in the train, or train में जो सुविधाएं दी गई हैं, they are almost akin to an aircraft. I mean, it's absolutely fantastic. I haven't traveled in it. Have you gone on the train, by the way? आप गाड़ी में गए हैं आप वंदे भारत में? I did go that. I was in the train today. Okay. And believe you me, I think it is world class. I have traveled in the trains abroad, I have traveled in the tubes abroad, and I think what we are witnessing right now over here is fantastic. The trains are absolutely world class, and Mumbaikars are going to have a treat. I think the devotees of Sri Sai Baba and the people who go to travel to Solapur are in for a treat. Yes. Fantastic. So, you have connected all the spiritual centers en route to Sholapur, Siddheshwar, Akkalkot, Tuljapur, Pandharpur, yes. Alandi, Triambakeshwar, Shani Shingapur. Everything. Was there a plan? I mean, it seems to be a fantastic plan because when he says, when the Prime Minister Modi says spiritual tourism, it is spiritual in every sense. One, Mumbai Sholapur, you're covering all the spiritual and spiritually inclined people would love to go all these places. And the others connecting Shirdi. It is fantastic. Maharashtra, Mumbai is out for tourism
as a big source of business. That's what, as Mr. Modi, and he said that 10,000 crores, probably 10 lakh crores, 10 lakh crores has been, budgeted only for infrastructure and never before any government has done this. How did this entire thing, any idea about how the spiritual tourism has evolved in such a big manner? Makranji. I think, if you look at our country, we have such fantastic temples and all religious places, not only temples, well, be it gurdwaras, your mosques. So I think it is, we are underplaying our potential to, have a fantastic world-class tourism facility, whereby not only Indians, but even people coming from abroad can experience and witness experience these places. So I think Vande Bharat in that sense is going to really open new doors for spiritual tourism, and 17 states, 108 districts being looped in by Vande Bharat is a milestone for India. That's right. So if you look at the network that eventually that we are looking at is the Vande Bharat train network, the metro network, the new airport network, and all these three are going to be linked. So I think even in terms of infrastructure per se, we are looking at a very bright future. Not just a bright future, sir, a magnificent future. I'll tell you why. Because most people are not talking about it. This is Vande Bharat train is not just a train. All these trains linking all the spiritual centers all over, which means that new infrastructure is coming up already in places like Sholapur, in Shirdi, in Pandharpur and elsewhere. Tuljapur, Akkalkot, Siddheshwar, fantastic. Siddheshwar. And all because of these trains. Trains, as Mr. Modi has been saying all along, connectivity is not just connectivity to go from place A to place B. That means you have infrastructure at place A, civic amenities at place A, hotels and other things at place A, and the same thing replicated in place B. So which means you are looking at an era of development never seen before. So this is effectively virgin territory which has not been explored before, which people have been talking about now for the last 50 years. कि 50 साल से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में जितने तीर्थ स्थान हैं, अगर उनको हम लोग जोड़ देते हैं ट्रेन के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, रोड के माध्यम से, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है साहब। और जब अयोध्या बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर होगा, अयोध्या का मंदिर जो है उसका उद्घाटन हो जाएगा, पीपल आर कैलकुलेटिंग, एंड इट्स अ वेरी, बाय द वे, इट्स अ वेरी वेरी underrated in my opinion calculation, which says, very conservative calculation, I'm so sorry, which says that every year we shall have more footfalls in Ayodhya than even Vatican City. That's what's going to happen. Makaranji, this is brilliant stuff. I think so. Even I would take it a step further and say that not just employment opportunities open up, new business opportunities that open up. And the beneficiaries, if you see, of all these or most of these projects, is going to be the grassroots people at the lowest rung, moving upwards. So I think it is not just the trains or Vande Bharat trains or the metro or the road or the new airports. It is the entire economy that that we are looking at. सर यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा कठिन सवाल, मतलब कठिन तो नहीं है, आप बड़े प्यार से जवाब दे देंगे. You are a very articulate man. मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि don't you think there should be an inquiry as to why these projects were delayed for so long? मतलब 2.5 साल से जो डिले हुआ, आई एम श्योर आपको तो खबर होगी भाई क्यों हुआ. ऐसा तो नहीं है. Everybody talks about going to a particular place, paying obeisance to a particular place. कहीं पे है क्या है, वो प्रसाद लेके जाइए, मंदिर में जाइए वगैरह वगैरह. वहाँ पे मंदिर में आरती करनी पड़ती थी या कुछ करना पड़ता था. कोई प्रोजेक्ट बढ़ने के पहले उसके बारे में आपको लगता नहीं है सर कोई तहकीकात होनी चाहिए? बिकॉज मुंबई has suffered. Mumbai has really suffered. I think Mumbai has suffered a lot because even I would say the worst that Mumbai has seen is the blatant corruption that happened during the COVID period, during the lockdown. Unaccounted. जिस तरीके से हमने as a corporate I have seen in the municipal corporation. So I would say the lowest levels of corruption have been surpassed. And a small example I'll give you.
of metro, in the erstwhile Devendra ji's regime, the metro work that was happening in Mumbai city was absolutely on time. It was on schedule. Yes. But immediately after MVA government came to power, आपने क्या देखा? It was the ego that was larger than Mumbaikars' interest. It was playing to the tunes of a few handful contractors, because of which आपने आप आरे का आज क्या हुआ? When there was everything on paper, there cannot be any other place but RA. So it eventually had to come there. The project was delayed. लोगों को मेट्रो में उनके MMRCL में उन्हें डाउट था कि ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ होगा कि नहीं. मुंबईकर्स के मन में डाउट था कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट टेक ऑफ होगा कि नहीं. और आज ये अपनी सरकार आने के बाद तुरंत, if you see the work is on absolutely it is up to speed. So I think Mumbaikars are seeing all this. They are seeing that this government means development, means the interest of the people. आज PMC में आप देखिए, the kind of budgets that have been sanctioned for the upliftment, for which Mumbaikars were deprived for all these years. So if you So see, I think it is. Sanjay Raut again blames, he says, Sanjay Raut's comments was, see, Prime Minister Modi is coming in a short span twice to Mumbai. He says, look how the BJP is scared that Shiv Sena is going to wipe the BMC elections. And from Sanjay Raut has started that this downfall of Shiv Sena would never have happened if the Congress president of Maharashtra wouldn't have resigned as the chairman of the CLP. assembly. CLP. Yes. So all these kind of things happening, they are finding ways. He says BJP is scared. Prime Minister is coming second time to see that BJP gives a good position, a fight to Shiv Sena in the BMC, because BJP, the Modi and the centre believes that Shiv Sena is going to win the BMC elections. They say, as earlier said by Aditya Thackeray, corruption, cartelization, all these kinds of things. Nothing done with the environment. But as you said, people can see what has happened. In fact, we are very happy when we look out of the window and we see the flyovers functioning. And that is it. But you got Sanjay Raut saying that these things are not. The Prime Minister is scared. What do you say, Magranji? Yeah, I think some people have a habit of putting their foot in their mouth. And I don't think Mumbaikars are also taking these comments too seriously, for the simple reason this is not the first time the Honorable Prime Minister has come to our city. If you see, there have been umpteen number of times, the last being on 19th of January, he came where he inaugurated 12 projects which Mumbaikars were so long being deprived of. Yes. Before that, whether it was 14th of June, he's coming on 6th of February 2022. So even when the MVA government was in power, he was here. On 18th of August 2019, he was here. So I don't think these people should be happy that for once someone is thinking of the interest of Mumbaikars, which they have not been able to do. So I think it is Mumbaikars are seeing through this. Do you think that Sanjay Raut's real comment that Nana Patole, if he was there in his post as a speaker, BJP wouldn't come back? He says they'll come back because Nana Patole made a big mistake of quitting as a speaker. How do you see it, Makranji? I mean, it's hard to believe now after some time that he talks like this. Even Nana Patole was stunned. What is he saying? He was actually laughing. But anyway. The fact remains that there was resentment. There was resentment from within. They were not able, their hierarchy was not able to get the pulse of their cadre. And nothing can, hide that. It is now, unless, and today we are seeing this kind of, declarations, the statements that we are hearing from their party people. So I don't think there's Mumbaikars will read much into it. But finally, I know, Magranji, you're very happy, we are very happy, very frankly speaking, Mumbai is getting something. I am always happy when Mumbai gets something, let's be very clear, because I've been in Mumbai now for the last 30 years. I came here in 1993 and I've never gone back to Delhi. In the sense that I don't want to move back to Delhi, I love it here. My point is, in terms of the BMC elections, of which is the elections which are going to be announced very shortly. Maybe we'll have the BMC elections either next month or in April.
at some point of time, मार्च या अप्रैल में जरूर चुनाव होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तो कोई आर्गुमेंट नहीं है साहब, सीधी सादी बात है. It is absolutely fantastic what you have achieved, what the BJP and the Eknath Shinde Sena has managed to achieve. There's no argument over there. लेकिन फिर भी, in terms of individuals, in terms of rights of people, in terms of project affected persons, I think we are still going very slow over there. Has the BJP decided to look in that area as well? Because we know for a fact, and we've done programs on this, there are lots of project affected people, even of the metro, who have not got relief and rehabilitation so far, who are still fighting to get their houses. Even though, by the way, and this is something which is very strange and shocking, they've got allotment letters. सबको allotment letter मिल गई है साहब MMRDA से, लेकिन उनको ट्रांजिट कैंप में रखा गया है क्योंकि उनके घर किसी और को दे दिए गए. अब मेरा ये कहना है कि साहब, this can snowball into a lot of resentment against whosoever is in power. What does the BJP plan to do about that? If you look at the whole, most of the projects that you're talking about where PAP was given to people, whether it was the metro project, whether it was any other infrastructure project, any other infrastructure project, the project was absolutely on track, on schedule. And if you see, had that consistency been completed, probably by now Mumbaikars would have been traveling in the metro, to the airport. Yes. Unfortunately, the last 2.5, 3 years, it was a very dark period for Mumbaikars, where most of these projects were stagnated or slow, or for whatever reason. And if you, I think most these projects have also it is international funding, the centers funding, state funded projects. So looking at this, if there is any, most of these projects are back on track. Whether it's the metro, whether it's the Trans Harbour, whether it's any other your SPPs. Yes. Most of these projects are back on track. I would say all these projects are back on track. So I'm sure that these issues that have been there or have been created in the last 2.5 years of MVA regime will also be sorted out. I hope so, and I hope so they sort it out very What quickly. Bajaj Sahab was trying to say is the bureaucracy and administration has to keep pace with development. That's There's right. no doubt that FADNAVIS, Eknath Shinde, Modi, it's moving in bullet speed. But when it's moving in bullet speed, the administration and bureaucracy also needs to move in the same speed. Yes. That was Mr. FADNAVIS had warned the bureaucracy earlier. He said, after taking over, he said, I want the administration to move the same pace and move on the same page and the same pace. But no, there are, like Aam Aadmi Party highlighting that relief and rehabilitation has not been done in many projects. In project number Metro 6, Metro 7A, people have not got houses. There's a lot of corruption. And probably one of the Rachna Indurkar has been suspended also in this particular thing. So how, development is there for everybody to see. But the poor and downtrodden has to be carried along. Their rehabilitation, relief. So effectively what Pradeep ji is really asking you is, are the bureaucrats with you? And if they're not, how many more heads will have to roll just so that they can keep pace with Mr. FADNAVIS and with Mr. Shinde? Sir. I think, there's no doubt that the bureaucrats are definitely with the government, and one cannot function effectively if that is not the case. Quite true. And the pace at which this government is functioning and is carrying out the projects. So I don't doubt that even other, from a legal background, I don't doubt that there is any difference in opinion or pace, or they are on different pages. But having said that, we have absolutely able administrators. We have at the helm of it Devendra ji, the Honorable Deputy Chief Minister, the Honorable Chief Minister have had a vast experience of working with the bureaucrats. So I don't doubt that at all. There are, if there are any issues, I think we have an able leadership in the state to deal with it. Wonderful, wonderful. And as both Mr. Shinde and Mr. Devendra Fadnavis have promised, most of the projects
that they've already mentioned. They've listed about 8 for Mumbai. There were 7 earlier. Now there are 8. They say they will all be completed not only on time but before time and a far lesser cost than estimated earlier. That's what they have said. And at the pace in which they are going, I don't doubt that part about time anyway. As far as the time is concerned, I am reasonably certain this government will complete everything on time. Right, Makranji, we will not hold you any longer. Thank you very much, sir. And Thank you. And lovely to see you smiling. Lovely to see you smiling and being so happy. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Right, that was wonderful. That was wonderful talking to Mr. Makran Narvekar of the BJP. Very, very happy, Mr. Narvekar. Most of them, sir. In fact, we are very happy. You're very happy. I tell you what. looking out of the windows, we can see the traffic. Can I No see that cares. footage on, please? Bhushan, can you put that footage on, please? Can we have that footage on, please? Can I No see that cares. footage on, please? Bhushan, can you put that footage on, please? Can we have that footage on, please? I want to see that footage again. I want to believe that flyover has actually started functioning. Can I see that, please? You know, earlier when we look out of the window, you used to find how will I go back home? It's Yes. going to take me 2 to 3 hours to reach, Yes, to to move out go of back BKC. home. And now look at that. It's all eased up, so much eased up. So less traffic jams, traffic moving absolutely freely. Yes. No problem. That is the Kalina Kurla flyover that we talked, a part of the Chembur, Santa Cruz Chembur link road Right. that we see. Yes. Absolutely free. The bottleneck at the Kalina BKC junction has been eased out, and this is the Kalina BKC Kalina flyover. Brilliant. Absolutely. Absolutely brilliant. Look at that. Yes. Just look at that. Just look at that. Just seeing it gladdens my heart. सिर्फ देख करके इसको सिर्फ देख करके मतलब आदमी खुश हो जाता है. उसके आगे जाकर के कुर्ला का LBS मांगा था वो अगर सीधा जाए तो Exactly, sir. वहाँ पर तो of course बहुत ज़्यादा काम चल रहा है and there is always a traffic jam there and I think that will take about at least 10 months before it can be completed. लेकिन ये जो हो गया है इसकी वजह से सब लोगों को जो BKC में काम करते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग काम करते हैं जो लोग हमें मुंबई के बाहर देख रहे हैं एक बार फिर बता दें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इज द न्यू बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नॉट सो न्यू एनीमोर ऑफ मुंबई. जैसे नारीमन पॉइंट है वैसा BKC है बल्कि BKC में मुझे ऐसा लगता है that BKC has more companies now than even Nariman Point. But this is really lovely. What has happened over here is terrific, absolutely terrific. Right, and we can of course continue to look at this for a long, long time. But right now I believe we have our friend from the Aam Aadmi Party with us. Let's go straight across to him. Aam and let's Aadmi ask Party him. portrays the real hardships that Mumbai face. सर The common ये man, क्या है the poor man. मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं जो प्रदीप जी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. आदित्य पॉल जी आई कैन सी यू. आदित्य पॉल जी लगता बड़ा बिजी हैं आप. बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं आप मुझे लग रहा है. ले मैं छोटी सी बात कह दूं अब तो आप आ ही गए हैं. सर वेलकम टू द शो. So nice of you for coming back over here again with us. Thank you so much. जी. And by the way we are talking to Mr. Aditya Paul of the Aam Aadmi Party, not the spokesperson from the Congress. जो आपके हेडर चल रहे हैं साहब वो कांग्रेस के बारे में चल रहे हैं वो जरा हटा दीजिए. थैंक यू सो मच. आदित्य पॉल साहब why can't I see Mr. Paul anymore? Right. All I'm trying to say is when we see Aditya Paul, we talk about the problems affecting the common man. What I wanted to say was, have we lost him? No, I'm here, sir. Yeah, he's here. All right. What I'm trying to say is that whereas we all feel very happy at these new big ticket projects for Mumbai, ये कोस्टल रोड हो गई, ट्रांस हार्बर लिंक हो गया साहब, सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, वो नया जो क्या है वो गोरेगांव मुलन का जो कनेक्टर है वो हो गया, उसके अलावा 2-3 और ऐसे प्रोजेक्ट हो गए. BKC के सामने हमारी खिड़की के सामने से जो फ्लाईओवर ऑन हो गया जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हो गया हूँ. लेकिन साहब अंदर से हम लोग खुश हो रहे हैं लेकिन जो बेचारा स्लम में रहता है ना आदमी, जो गरीब आदमी है, जो लोअर मिडिल क्लास वाला आदमी है, उसकी बात आज की तारीख में कौन कर रहा है? वो ये शख्स जो है ना अभी स्क्रीन पे आदित्य पॉल साहब, जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज की तारीख में सिर्फ वही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है. सीधी सादी बात है. आज की तारीख में अगर कोई गरीब की बात कर रहा है, कोई बेचारे झोपड़पट्टी में रहने वाला उसकी बात कर रहा है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है. It seems almost as if the other parties have forgotten about these people. They don't exist in the new, how shall I put it, Mumbai, which is soon going to be compared to New York, to Shanghai, to London, to Paris. Is London, Paris
न्यूयॉर्क वाले मुंबई शहर में आदित्य पॉल साहब जो गरीब आदमी है उसकी क्या स्थिति रहेगी, ये जरा बताएं आदित्य पॉल साहब। एब्सोल्युटली सर, आपने एकदम सही सवाल पूछा। मुंबई के जैसे आपने आपके पिछले शो में आपने बोला था 65 to 60% ऑफ मुंबई 65% साहब, इट्स 64.6% जी, तो 65 ही हो गया जी। हाँ, सही बात है। 65% of Mumbai lives on 20% of the land, and 65% of Mumbai is in what we call lower middle class to the lower socioeconomic strata of the city. And today, while it is very clear that many political parties don't care about them, Yes. what I want to talk about is not just that the political parties don't care about them, but the political parties take advantage of them to further their own interests. Now, just yesterday, we took a very important press conference. I'm reading out these figures for you. 1,000 crore scam was found in MMRDA's Metro 6 PAP, that's Project Affected Persons, allotments. What we saw was there's a very simple modus operandi. First, they go to identify project affected people. Then they go and they send across an agency who says that, look, there are certain project affected people over here whose houses were already demolished. But shockingly, when submitting the report, this agency attaches photographs of these people's houses. How did they get these photographs of the houses were demolished already by the MMRDA? And a large number of houses which never existed were shown as existing and were provided with an alternative and they were provided with a house that was supposed to be under a project affected person. Now this has been happening in MMRDA under Miss Rachna Indurkar, who has been around for more than 5 years. Even 10 years. 10 years, exactly. That's right. Your term is supposed to be only 5 years. And Yes. I heard on your show, I was paying attention to your show, sir, that Miss Indurkar has been Transferred. has been suspended or dismissed. Of course, we're waiting to see what the final thing is. But despite I think she's this- been transferred, awaiting a new position. So effectively, she's in limbo right now. जी बताएं। Transfer just means out of sight so that people think it's out of mind. जी। Officers who have been working hand in glove, and sir, let me make this very clear, they have been working hand in glove with the Shinde government because since 2014, Mr. Eknath Shinde has been in charge of this, of the urban development ministry, and Mr. Eknath Shinde has been in charge of the ministries under which MMRDA falls under. So let us be very clear. Everything has been going hand in glove with the gentleman who is now sitting in the chief minister's post, and we cannot stop at just a mere transfer. A transfer is simply a case of out of sight and out of mind. We have to ensure the person who is guilty, every single person right from the bottom to the top, is put behind bars under the right sections of the law, and this kind of corruption is prevented. This is how, sir, you find politicians who assets suddenly ballooning. This is how we are seeing that in the name But the of real project affected persons, you can see them on your screen right now. absolutely. Aditya Paul Saab, they haven't got their houses They yet. haven't got the Absolutely. Just I think you pointed this out in your last segment to I believe Mr. Darvekar. Yes, There we are did. there are many project affected persons Who haven't got houses not yet, their yes. homes. And at the same time we are seeing this scam happening, this 1,000 crore scam. Is it 1,000 crores or is it 2,000 crores? I'm not sure. How much is it? Well, we would have to have a look and see finally how it is happening. And let me point out Because that these not even in Thane. now look like very small figures. I'll be very frank with you. ये 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का स्कैम, अरे भाई Correct. 1,78,000 करोड़ का स्कैम, इतने का स्कैम, मतलब ये बहुत कम फिगर्स लगते हैं. लेकिन फिर भी बोलिए आदित्य जी बोलिए. ये फिगर्स से हम लोग शायद से एक बार नंबर देख के शायद से हम पागल हो जाए, कितने सारे फिगर्स हैं. बट मैं इसका एक सिंपल एनालॉजी डालता हूँ. इसमें अगर 1 रुपया भी गया
जी। वो टैक्स पेयर के पॉकेट से निकला है, टैक्स पेयर के वॉलेट से निकला है. I think I want to point out to Mumbai's taxpayers, we pay some of the highest income tax in the country. Tax season's coming up. Our CAs are hounding us to file our filings and make sure that we have paid our taxes on time. When a poor person buys a biscuit or a small packet of chips or or a packet of bread, he pays a GST. We are all paying taxes from a middle class person to the poorest person, and when 1 rupee also has been stolen from our pockets and a scam is being done, it is being taken straight from our pockets. So are you going to work? Are you going to work to get this money back, Aditya ji? Absolutely, the Aam Aadmi Party is going to be on Andolan until justice is served. That's your favorite line, Pradeep. That's your favorite line. That's Pradeep Nambiar's favorite line for the last 20 years. We want our money back. That's it. Absolutely. We want our houses back. Absolutely, my sir. house has been given to somebody else. I mean, that's what the scam is. You highlighted. Now, Aam Aadmi Party is targeting Eknath Shinde. You're saying Eknath Shinde has been in charge of that particular department since years. And even now as a CM, things are happening. Now, do you think it's a bureaucratic lapse where administration and bureaucracy is not keeping pace with government? Eknath Shinde, what the current government believes that they are moving in a bullet pace. They are moving in a super space. It is for us to see also a project that is just outside BKC, our office. It was lying dormant for 2.5 years, and 6 months after this government has come up, I mean, the things have started to work. But the bigger issue is relief and rehabilitation. Now, do you think it is a bureaucratic lapse, administrative lapse? Administration and bureaucracy is not keeping pace with development. You have got Eknath Shinde, Dev FADNAVIS demolishing structures, moving people out and carrying out infra projects. At the same time, bureaucracy is not getting a relief and rehabilitation. What is it? Is it corruption? Is it organized crime? What is it? I will use a very specific term as to what it is. It is a mafia syndicate. And let me point out, sir, you have very correctly said that could it be that the bureaucracy is working wrong and is not in cohesion with the legislative? Sir, the buck in a democracy stops at the legislative. And if you have CM Eknath Shinde, who has been the Maharashtra Urban Development Minister since 2014, the buck stops at his office. It does not matter if it was an individual surveyor. It does not matter if it was an individual bureaucrat. It does not matter who else was involved. The buck stops at the legislative office, at the Chief Minister's office, at the office of the Maharashtra Urban Development Minister, who is none other than Mr. Eknath Shinde. This is how a democracy functions. This is how a democracy works, and there is nothing else that can be said, and it is because we give excuses that perhaps the bureaucracy was tainted and not the politician, which is why these scams happen again and again and again and again in India and in Maharashtra. Metro, yes, metros, 14 lines of metro, and you got Mumbai is already a crowded city. A lot of people are going to be, houses are going to be dispossessed. People are going to be dispossessed of their property. You got 14 lines, out of only 3 is implemented. So you talk about another 11 metro lines to be, implemented. So you're talking about such a lot of people who are going to be displaced. Your thing is fantastic. Aam Aadmi is talking the only party that is highlighting the issues. In 7A, you all came out and fought out for the people who had not got rehabilitation, relief and rehab. They were The only party. They had shifted to Vadala. And now, in 2 days back, you had another press conference where you talked about project affected people of 6A. Now, this is just the beginning. This is just the tip of the volcano. Look at the, how big the scam could be if in every project affected places, you are having fake ghost structures that are put in, and the most eligible PAP is not getting his houses, like that in 7A. 7A people didn't get it. Your party took it up. Your party is still fighting.
Your party took बहुत आंदोलन किए लोग एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, MMRDA के सामने, but they are that time itself we smelt it that this is a very organized crime racket. It's very difficult because unless there is support from the top, this crime syndicate cannot function. So you have taken the right thing. Now, where is the solution? Because is the government going to budge? What are the indications? Because we heard from our sources that Rachna Indurkar has been immediately shunted out from this place. We're trying to ascertain the facts. But where do we go from here? Because you're talking about 14 lines. You're talking about what development? They talk about, BJP talks about 14 lines. You talk about Navi Mumbai International Airport. You got Mumbai Trans Harbour Sea Link. You got the bullet train. You got the Airoli Katai Tunnel Road. Yes. Goregaon Mulund Link Road. You got the coastal roads. People are going to be displaced. How are you going to give them justice? Because we find a difference. The bureaucracy administration is not keeping pace with development, and that is inducing corruption, organized crime as you call it. And you say the top man, the number one man is responsible. Aditya Paulji, where's the solution? Once again, I want to point out that in such a situation, there is no difference between the bureaucracy and the political legislative. Everything is a syndicate. Without the blessings of the political wing, the bureaucracy cannot do these things. And the second point which you made is Rachna Indurkar is apparently being transferred. Transferred where, sir? Transferred to another part of the country or another part of the state where again another sort of a scam will take place? Why can't we get out of this whole vicious cycle of transfers and move forward towards a sort of a solution where bureaucrats who are doing these things are penalized? They go through the judicial process so that tomorrow no bureaucrat under any political pressure will even dare to do such a thing. Aditya Paulji, step out of the letter of the law or step out of the shadow of the letter of the law. Aditya Paulji, ये बताएं क्या आम आदमी पार्टी कोर्ट में जाने को तैयार है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रीति शर्मा मेनन जी वहां पर थी, रूबेन मास्करेनस वहां पर थे, संदीप काटके जी वहां पर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक्सपोज किया, एक एक चीज सामने रखी सबके। And from the looks of it, it looks very, very convincing. After all, whatever you have mentioned, you have got on the basis of a right to information query. The whole thing has come from the government itself. ये नहीं है कि आपने कोई मनगढ़ंत बात कह दी हो। मेरा आपसे ये कहना है कि क्या आम आदमी पार्टी इसमें, मान लीजिए कोई एक्शन नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता कोई ज़्यादा एक्शन होगा, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो क्या आप कोर्ट जाने को तैयार हैं इसके ऊपर कि आस्क फॉर अ कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी, जिसकी मांग आपने सरकार से करी है? Will you file a public interest litigation in the Bombay High Court and ask for a court monitor inquiry or investigation to be held in this matter? Aditya Paulji, बताएं. Aam Aadmi Party will be following this issue, this scam, and be taking it right to its natural end. Whatever the method and the way forward is, we will be taking it. Whether it requires going to the court, whether it requires doing an andolan, we will be there and we will follow this right to the end. No, Pradeep ji, yes, you're right. This can only, one of the things that can go on is an independent inquiry, a court-monitored inquiry, an inquiry with a retired High Court judge. This is the only way forward. Or a sitting judge. For Mumbaikars and Maharashtra of justice. Or a sitting judge. Yes, absolutely. यहाँ आदित्य पॉल जी एक छोटी सी बात, बहुत, प्रदीप जी एक सेकंड, yes, ये बात बहुत जरूरी, मैं भूल जाऊंगा नहीं। You know, we all admire अरविंद केजरीवाल, अरविंद जी के हम बहुत प्रशंसक रहे हैं, right from day one. जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ 10 साल पहले, nobody gave आम आदमी पार्टी even the ghost of a chance. ये कहते थे कि ये क्या है, ये लोग क्या गधे लोग हैं, कौन है ये लोग। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पता नहीं आपकी 30 सीटें आई थी कि 34 सीटें आई थी, याद नहीं मुझे। उसके बाद अगली बार आप लोगों की, बाप रे बाप, मतलब कितनी सीटें आ गई यार, 67 out of 70. Absolutely. And in the next election 62 out of 70, which is amazing. लेकिन जब आप पहली बार आए थे, उसके बाद आपने इस्तीफा दिया क्योंकि कांग्रेस का समर्थन आपके पास था। आदरणीय सामान्य अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था सबके सामने
कि मुझे मेजॉरिटी में ले आइए, उसके बाद जो शीला दीक्षित जी की पूरी करप्शन है, संदीप दीक्षित जी की पूरी जो करप्शन है, उसका मैं पूरा पर्दाफाश करूंगा, एंड आई विल सी टू इट दैट बोथ ऑफ देम आर इन जेल, ऐसा उन्होंने कहा था। मैं मानता हूं that he has limitations. Delhi, the law and order is not with him. He can't really do very much. But not even a single application to that effect was filed in the court, which is why there is a criticism against the Aam Aadmi Party, which is leveled by just about everybody, that you guys shoot and scoot. जैसे MMRDA का केस है, MMRDA के केस में आपने चलिए एक्सपोज कर दिया, और जिस तरीके से आप इसको बता रहे हैं और हम लोगों ने खुद देखा है, there is a possibility that there might actually be a whole lot of truth in this. But why should people take you seriously when you say that you will take it to its logical conclusion? Because you haven't taken anything to its logical conclusion so far in Delhi. Sir, बताएं. It's a great question, sir. The fact of the matter lies that wherever we have had the power, wherever we've had complete authority, we have always finished and taken things to the end. It is important to be noted that the ACB was taken away from us before we could start taking any serious action against the Congress scams. Yes. I don't know why the BJP wanted to protect the Congress. That goes back to our old debate which we had in the last show, where I said that Congress is most likely the A team of the BJP. And everybody in this country knows that Aam Aadmi Party, when we speak about something, we speak about it from an honest background. We always have all our ducks in order, and that is why we have won 3 elections back to back in Delhi, and we have won a massive mandate in Punjab, where we have a chief minister who is in a full state, and almost every single thing which has been followed, whatever has been promised, whatever is to be done is except you have taken no action against Mr. Prakash Singh Badal and Mr. Sukhbir Badal, which is all right, which is okay, there is no problem. After all, but both the Badals are very good friends of Mr. Bhagwant Mann, there is no problem at all. And anyway, we have zero tolerance. We have a zero tolerance policy to all kinds of corruption, and action when taken will be taken in a way that nobody. But has a case been registered? Aditya Paul Sahab, I don't know whether you are aware. Has any case been registered by the Aam Aadmi Party government? I'm asking you this question only because you brought up Punjab. आपने पंजाब की बात करी, इसलिए मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ. वरना we are only concentrating on Mumbai. अगर आपको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है तो no problem. आप जानकारी ले आए, उसके बाद जरा बात करेंगे. क्या सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है, जिनकी करप्शन के बारे में आम आदमी पार्टी बोलती हुई थकती नहीं थी चुनाव के पहले? क्या कोई भी केस रजिस्टर हुआ है सर? Sir, whoever is involved in corruption in Punjab will have the strictest action taken against them. This I guarantee you. And I hope that this you can take a guarantee from me. And we are a young government in Punjab. Everything cannot be done in one day. You're doing very well in Punjab. Let me tell you this yes, very frankly, because that's the report we get from the ground. This is just a distraction. This is just a. Yes. Pradeep ji, you wanted to ask? No. Aam Aadmi Party in Mumbai has been highlighting Maharashtra has been highlighting a lot of good issues. Aditya Pal. Now you came up with something that Mumbai, Thane Municipal Corporation Hospital is going to be privatized. Now that is going to affect the entire area, Mumbai, Diva, and all these kind of belt rural areas where there is hardly any hospitals. You highlighted it. That is, we need to give credit to them. You highlighted again, one of your office bearers called up how one of your persons were beaten up by this Abu Azmi's, one of the corporators for Samajwadi Party. That is, you highlighted how the RA road is so bad and how the High Court has pulled up the government, and the government tells that, we are not involved. PWD, no, PWD is a part of the government. PWD is a part of the government. Now how can the government say, they are responsible? No, we like this. You are highlighting all these kinds of issues. Can you tell us a little bit about all these things? One is the Thane Municipal Corporation, Mumra TMC, Thane Municipal Corporation Hospital. What is the cause of privatization? Is it going in? Why Aam Aadmi Party is fighting bitterly to make it into a government medical college or something? What is it exactly issues? These 2 or 3 issues. So without getting too deep into the details, without getting into understanding of what is, why is somebody trying to privatize? Yes. We need to remember that the need of the hour in Maharashtra today
is more government hospitals, That's right. more government clinics, more affordable, accessible healthcare. And medical And colleges. we cannot have Yes. we cannot have our existing infrastructure privatized when actually what we need to be doing is to be doubling down and multiplying on this existing infrastructure. That is what the demand amongst the residents of Mumra, Kalwa, and in Thane is. That this is why we do not want a private hospital. We want it to be a government college, and we want continued services to the residents by this hospital, and we want much more than that. And they know that it is only Aam Aadmi Party who is standing together and working with them to make sure that they get affordable, world-class healthcare, whereas the other parties are just looking to take and snatch healthcare out of the reach of the Aam Aadmi. ये आदित्य पॉल जी यहाँ पर ये बताएं कि आपने हेल्थ केयर की बात करी, जो आम आदमी पार्टी की हेल्थ केयर प्लान है, योर हेल्थ केयर प्लान, when will we get to see it, especially with regard to Mumbai, because the number of hospitals that are there under the BMC, the number of dispensaries that are there under the BMC have all fallen to rack and ruin. Of course, now the government has come out with Apla Dawakhana, which is essentially mohalla clinics, but at the same time, what does the Aam Aadmi Party intend to do? Is that paper ready? Because I was told all of you guys are working on something like that. Firstly, I am very, very happy that the Shinde FADNAVIS government has decided to copy our schemes which have worked for us Yes. in Delhi, and they are trying to bring it here. But I would like to say one thing. I believe the first person to say this was our spokesperson, Mr. Chadda. नकल करने में भी अकल लगता है. So we are all waiting to see what these Apla Dawakhanas will be like, to see if they work. If they work, great. Kudos to the government who has taken it. Learn from what we've done in Delhi, implement it here. Nobody's going to stop you. We'll be the first people to congratulate you. As regarding to our plans for healthcare in Mumbai, it is extremely clear. Every single municipal ward where a corporator sits will have a mohalla clinic. This is, of course, an overall vision, but eventually, when we are in the municipality, we will understand different patterns, different kinds of places where people will go. Perhaps some places will require more than one mohalla clinic. Perhaps some places will require one amongst two. All these mohalla clinics will have dispensaries where medication which will be prescribed will be available to people for free, and will be available all the time. Do note that this medication issue becomes a big problem in Maharashtra and in Mumbai, where medications are almost out of stock in government dispensaries. This problem will be solved. We will ensure these things happen, and these will be world-class clinics. I can tell every single Mumbaiker that these clinics will be better organized, better in infrastructure than even the clinics of your best private general practitioners. So in effect, what you're really saying is that they'll also have a doctor. Because I don't think the Apla Dawakhana has a doctor in residence. That's what I've been told. I don't think so, very frankly. I think that's just a dispensary. That's Ji, what I please, read. please, So, please. no, the Aam Aadmi Party Yes, you were says, saying. What was Mr. Paul saying? What were you saying, Mr. Paul? That's what I said. We have to see. Let us see what finally comes out of place in Apla Dawakhana. If Right. they've done a good job, great. If they've not, but like I said, nakal karne mein bhi akal lagta hai. now Mr. Modi says 10 lakh crore for infrastructure. He has unleashed development in Mumbai and Maharashtra. Ye train, wo train, Vande Bharat train. You talk about metro lines, metro rails. And then he says, development bhi hai, humne garib ka ख्याल bhi rakha hai. He says, we have taken care of the middle class like nobody has taken care. 5 lakhs tha, income tax exemption, middle class ka 7 lakh humne kiya. We are providing jobs, we are providing employment, we are making the youth invest the excess amount which we are going to tax. He is going to save for himself. He says, look at what we have done. PM Kisan, he says 11 crore farmers have been benefited. 3 crore houses has been given. Gas free to 9 crore people. Toilets to 11 crore people. Ayushman to 2 crore families. Now what I am trying to say is, you got a problem, you are highlighting the problem. But here is a person who says, I have done for every segment of the society.
I've done for development, infrastructure, 10 lakh crores, like nobody, no other government has ever done before me. And I have taken care of the Kisan also. Kisan का बच्चा को भी हमने देखा है, we have protected them. आयुष्मान के माध्यम we have protected them. Houses दिए, छत दिए हर घर में. He says, इनके allegations को कौन सुनेंगे? He said, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के allegations को क्या ये लोग सुनेंगे जिसको हमने इतना benefit दिया है? जी बताएं आदित्य पॉल जी. सर अगर सुनते नहीं थे तो शायद से हम इतने इलेक्शन नहीं जीते थे. But I would like to point this out. Let's see. I have taken a note of the points which you brought ahead. One by one, sir, the point was brought about Ayushman Bharat in Delhi and in Punjab. We will be providing in Delhi. Already we are providing free healthcare beyond the limit of Ayushman Bharat. Ayushman Bharat has an upper limit. It's an insurance scheme. We provide free healthcare. You just enter the hospital, you exit the hospital. It's complete. You don't have to pay anything for it. It's a government hospital. When there is something a government hospital cannot fulfill, the government hospital refers you to a private hospital which can do it, and it is paid at the exchequer's cost, which is again out of the tax which you have paid. You're getting your tax money back to you. You talk about the farmers. Why has the MSP not gone up? It is not just about Fasal Bima Yojana. Why has the MSP not gone up? You talk about sanitation. Let me remind you, sir, Devendra Fadnavis in his last government had declared Maharashtra open defecation free. Yes. Mr. Fadnavis and everybody who is saying this, sir, please come with me. Let me take you for a tour of the Aam Mumbaikar's life. For you to actually realize how people are living in Mumbai, how people are surviving, and what the reality and the preach of your so-called bade dawe and your speeches are. It's all good to make a speech and it's all good to put big numbers, but when you divide that number by the average Mumbaikar or the average Indian, the impact is very low. What have you done to provide the Mumbaikar relief in this time of high inflation and high prices? Have you provided them relief for their electricity, for their water? And this is a conversation I had just yesterday when I was talking to a few residents of a basti in Mumbai, all of who, by the way, are working in either government jobs or their equivalents in private sector. All first generation educated youth from Maharashtra, sons of the soil, who are saying, how are we to afford anything? If Aam Aadmi Party comes, we will have free water, we will have free electricity, we will have free education, we will have free healthcare, and we will have many other free things provided to us. And this will remove the boj, the weight of inflation off our shoulders. We will immediately Right, we heard that. thousands of rupees. And this is conversations that we're having in areas where BJP has sitting corporators, and yet people are talking about Aam Aadmi Party, because none of these schemes, sir, have. I hope these conversations, Aditya Paul Sahab, both Pradeep ji and I hope these conversations actually turn into votes. Because it's nice to have good conversations supporting you, but as long as they don't turn into votes, other parties don't have very much to fear. But I'm very impressed when he says. जी, आपने last time एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट किया था कि क्या मुंबई पे काम पे वोट करते हैं जी. तो मैंने कहा था कि काम ही नहीं हुआ है तो वोट क्यों करेंगे काम पे. बट सर आपको मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ आपके लास्ट स्टेटमेंट से. काम पे शायद से वोट होने से पहले काम पे बात होनी चाहिए, और मुंबई में काम पे बात के चालू. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है आदित्य पॉल जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली का मॉडल और जो पंजाब में आप लोग कर रहे हैं वो सबके सामने है, उदाहरण है, हवा में बात नहीं हो रही. सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी का if they are bettering Ayushman, yes. then I mean, but which is true, by the way, which is absolutely true in terms of medical care provided by the Aam Aadmi Party. The kind of care they are providing even for cancer patients, which requires very, very expensive treatment, is all paid for by the state government, by the way. Today, medical is the biggest issue. Yes, biggest issue for medical the citizens. and Yes. electricity. Yes, these are and education. Parents will do anything to sacrifice for the education of their kids. And if any party, if it's the Aam Aadmi Party, great for them.
Any party comes along and says, hey, I'm going to provide you with world-class education free of cost, which is not going to hit your pocket, I don't see how you can combat that. Aditya Paul ji, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए. All the very best to you and keep it up. And I would love to see when you take this government to court or you take MMRDA to court with regard to the 1,000 crore scam or 2,000 crore scam or whatever it is. It's the people's money. It should come back to the people. But we appreciate the fight. The fight is fantastic. Oh, yes. The fight for the poor. And at least somebody is fighting. At least somebody is fighting. Of that, Yes. we are very happy. We are very, very happy. Thank you so much. Right, that was Mr. Aditya Paul, and we were also very, very happy with the other man who's been fighting, and that of course is Rahul Gandhi. Yes, yes. राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, आप जितना मर्जी उस पर हंस लीजिए, कुछ भी कर लीजिए साहब, सीधी सादी बात है, उसने कांग्रेस को जागरूक किया है, कांग्रेस जागरूक हो गई है, अभी जागरूक हो गई है, जाग गई है. जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता था, वर्कर था, जो बेचारा चुपचाप बैठ गया था, उसको लग रहा था ये हो क्या गया, राहुल गांधी ने एक बार फिर उसको जगा दिया. आज की तारीख में आप जो मर्जी कह लीजिए, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक और कच्छ से लेकर के नागालैंड तक जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब जागरूक हो गए हैं और सब काम करने को तैयार हैं. बिल्कुल sir. Now it's up to You got their base. They have got a fantastic base. More than 20%, even in the limited terms. 21%. और अभी I say 24% चला गया हुआ 21% है. लोगों को जी. जागरूक करके एक मोटिवेटेड तरीके से गोल दिखा के 2024 लड़ना है. उससे पहले 10 स्टेट ये साल लड़ना है. Garnering them, putting resources, giving them ideas, giving them goals, and जी. moving them in one direction. Fantastic. He has achieved a great feat. Now all that Rahul they're Gandhi waiting has achieved a for great is, feat. प्रदीप जी, all they're waiting for is for the local leadership to wake up. बिल्कुल. Yes. एक बार लोकल लीडरशिप, स्थानीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उसने एक बार नहीं ये वाली दिशा दे दी कांग्रेस के कार्यकर्ता को, तो एक बार फिर कांग्रेस जो है बहुत अच्छी चुनौती दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को. And that will be good for the country. Very frankly speaking, that will be great for democracy. At the moment with us, joining us from the Congress is Mr. Balaji Gade. Balaji Gade साहब नमस्कार. 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 राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ आरकेबी नेशन नाउ से. मेरे साथ जी, नमस्कार. प्रदीप नापिया जी भी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार वकील साहब. आप हमारे साथ आए. गाड़े साहब, आप ये बताएं, आज की तारीख में एक डिबेट चल रही है कांग्रेस के भीतर एक अंदरूनी एक चर्चा चल रही है कि इकट्ठे लड़ें या बतौर एमबीए के तहत लड़ें, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के तहत लड़ें मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए. अब जो लॉजिक है वो तो ये कहता है कि यार एमबीए के तहत लड़ना चाहिए अगर बीजेपी को रोकना है, लेकिन पार्टी में जो बाकी लोग हैं, जिन लोगों से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं अगर पार्टी को बचाना है, बढ़ाना है, तो कांग्रेस को अकेले लड़ना पड़ेगा कॉर्पोरेशन का चुनाव. गाड़े साहब, इसके बारे में जरा कुछ रोशनी डालें. नहीं, अभी इसके बारे में संगठनात्मक पातळी पे जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं जी, वो मीटिंग करके डिस्कशन करके जो भी सही होगा, जिस तरह से इस देश में झूठ की, जाति और धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने की राजनीति बीजेपी ने पिछले 8-9 सालों से इस देश में शुरू की है, उसको रोकना और लोकतंत्र को बचाना इस सबसे बड़ी चुनौती सभी विपक्षी दलों के सामने है. और आज यहाँ पे संसद में जो लोगों से चुने हुए गए जो सांसद है, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनके सवालों के जवाब नहीं दिए जाते. तो आपने जो सवाल पूछा है कि कांग्रेस कैसे लड़ेगी, तो कांग्रेस जो भी समविचारी पार्टियां हैं उन सभी को इकट्ठा करके जो भी हमारे नेतागण हैं वो डिसीजन लेंगे, फिर वो बीएमसी हो या फिर महाराष्ट्र स्टेट हो या फिर देश हो. यहाँ पे महाविकास आघाड़ी से ही हम लड़ रहे हैं. अभी भी बाइपोल हो रहे हैं, अभी भी महाराष्ट्र में पूना में 2 बाइपोल हो रहे हैं, तो वहां पे भी हम महाविकास आघाड़ी इकट्ठा ही लड़ रहे हैं. कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी की शिवसेना, हम तीनों मिल के लड़ रहे हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है, हम वहां पे भी मिल के ही लड़ेंगे. लेकिन ये कॉर्पोरेशन का जो चुनाव होता है साहब, ये सबसे निचले स्तर का चुनाव होता है. जो हमारा जो भी वर्कर है बेचारा, कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता है, हर पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, उसको लगता है कि यहां पर मुझे मौका मिलेगा चुनाव में लड़ने का. अगर वो मौका भी आप उससे खोलेंगे और कहेंगे भैया अभी अलायंस है जो कि बीजेपी को रोकना है, तो हो सकता है पार्टी को नुकसान हो जाए. बताएं. यहाँ पे हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को अभी ये पता चल चुका है कि हम अगर बिखरते जाएंगे और एक दूसरे के वोट अगर शेयर करते जाएंगे तो फिर से जुमलेबाजों की सरकार बैठ जाएगी
और जिन लोगों का यहाँ पे नजर है, आज ही की न्यूज आपने देखी होगी, मैंने आपका पहले चैनल देख रहा था, वहां पे कुछ तो चल रहा था, अभी बता रहे थे जो मोदी जी आज यहाँ पे आ गए थे मुंबई में, अभी मैं मुंबई में से ही बात कर रहा हूँ। तो पिछले 15-20 दिनों में दूसरी बात है, 15 मिनट के लिए झंडा दिखाने के लिए, हाँ 20 दिन में झंडा दिखाने के लिए मोदी जी यहाँ पे आ गए थे, और बहुत सारे ताबड़तोड़ यहाँ पे लोगों के लिए जुमले फेंक के चले गए हैं। तो आपने जो कहा कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि मौका, तो कार्यकर्ताओं को पहले तो पार्टी के साथ लॉयल्टी है, देश के लोकतंत्र के साथ लॉयल्टी है। उनको पता है कि जिस तरह से ईडी है या फिर सीबीआई है या फिर पुलिस यंत्रणाओं का जिस तरह से यहाँ पे यूज किया जा रहा है, उसका गैर यूज किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसकी वजह से वो हर जो चाहता है, जो बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ बोलता है, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उसके पीछे ईडी लगाई दिया जाती है, या फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ठान ली है, इस देश को अगर बचाना है, इस महंगाई, बेरोजगारी और जुमलेबाजी, झूठे वादों से अगर देश को बचाना है तो मिल के लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे आने वाले दिनों में, जैसे अभी देखिए कि पिछले 1 से 1.5 साल बहुत सारे ऐसी कॉरपोरेशन है, जैसे औरंगाबाद की कॉरपोरेशन है, बहुत सारे नाम यहाँ पे मैं गिना नहीं सकता, जहां 2-2 साल हो चुके हैं, 2-2 3-3 साल हो चुके हैं कि वहां पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सरकार डर रही है। सरकार इसलिए डर रही है कि जनता का मैंडेट जो है, जनता का जो मतदान है, वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में विधान परिषद के 5 जगहों के लिए यहाँ पे चुनाव हो गए, वहां पे मुश्किल से शिवसेना से चुराया हुआ जो बीजेपी में लाने के बाद एक ही सीट वो जीता सके, बाकी सारी की सारी सीट महाविकास आघाड़ी ने यहाँ पे जीती है। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ तो एक सर्वे आया था कि लोकसभा की और विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे, कुल 80% सीटें यहाँ पे महाविकास आघाड़ी जीत रही है। तो हमारा कार्यकर्ता संतुष्ट है कि पहले बीजेपी बाहर जानी चाहिए सत्ता से, क्योंकि सत्ता का जो नंगा नाच यहाँ पे चल रहा है, मैं ये शब्द यहाँ बहुत जिम्मेवारी के साथ यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने सुना होगा, मैं आपका ध्यान उस चर्चा पे जो देश में इंपॉर्टेंट है, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती, आप जैसे जो पत्रकारिता के असली चेहरे हैं वही दिखाते हैं, मैं उस पे आना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने, हमारे नेता राहुल जी ने संसद में जो सवाल मोदी जी से पूछे, उसके दूसरे दिन जो ड्रामेबाज भाषण मोदी जी ने किया, उसको सुनने के बाद पंचायत स्तर पे सरपंच जो 2 बार अपना पैनल चुन के लाता है ना, वो भी इतनी क्या बोलते हैं, उस एरोगेंटली बात नहीं करता। हाँ मैंने 2 बार पैनल लाया, ऐसे वो कह रहे थे कि मैंने अकेले ने क्या किया है आपने। यहाँ पे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि किस तरह से 609 नंबर के ऑल वर्ल्ड में 609वें नंबर पे जो आदमी था, वो 2 नंबर कैसे बन जाता है। यहाँ के 5-6 एयरपोर्ट उसको कैसे दिए जाते हैं, पोर्ट कैसे उसको दिए जाते हैं, उस पोर्ट पे हजारों टन वहां पे कैसे चरस, गांजा, हीरोइन जो भी है वो कैसे बरामद होता है, उसके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं पूछता। इसके ऊपर मोदी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। मोदी जी जब भी उनकी गलतियों के ऊपर उंगलियां उठाता है तो नेहरू को ढूंढे जाते हैं, और उनके दिमाग, मोदी जी बहुत ही डरा हुआ, और हमारे मराठी में बोलते हैं उसको भितरा, यानी कि वो डरपोक आदमी है। हिंदी में वो इतने डरपोक आदमी है कि वो सच्चाई से डरते हैं, इसलिए वो नेहरू की तरफ जाते हैं। और ये हिंदुत्व की बात करते हैं, जिनको खुद का कल्चर पता नहीं है। हिंदू धर्म में जहां पे हम अपने पिताजी का नाम लगाते हैं, और ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी नेहरू का नाम क्यों नहीं लगाते। अरे भाई, नेहरू जी की बेटी थी इंदिरा जी, उनकी शादी हो गई फिरोज गांधी साहब के साथ, तो उनका नाम लगाएगी। इनके हिंदुत्व के ऊपर भी मुझे संदेह है। ये हिंदू नहीं है, इनको वसुदेव कुटुंबकम से इनको कुछ लेना देना नहीं है। या एक तरफ कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, दूसरी तरफ मुस्लिमों के साथ नफरत करते हैं। क्या उस वसुदेव कुटुंबकम में मुस्लिम नहीं आते? लेकिन आज तो बोहरा समाज, जो मुस्लिम समाज है, उनकी जो यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट करने के लिए वो खुद मोदी जी यहाँ पर आए। सही, वही तो ये दोगलापन है। लेकिन मैं जिस तरह से चर्चा हो रही है, मुझे एक आपको बात बतानी है और आपको धन्यवाद देना है और आपको अभिनंदन भी करना है, इसलिए कि हम गांव में
पंचायत स्तर में जाके काम करते हैं। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, मैं सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। वी कैन हियर यू। हाँ हाँ, हम हाँ गांव में और सिटी, हम हर जगह जनता के बीच में जाके काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इस माध्यम से, आपके लोगों तक के पहचाना चाहूंगा कि अभी यहाँ के युवा, यहाँ के लोग जिनको समझता है कि क्या हो रहा है, वो सब डरे हुए हैं। वो इस बात से डरे हैं कि इस देश में जो सरकार हमने चुनी है, वो सरकार हमारे हित में काम नहीं कर रही। और दूसरी चिंता ये है कि इस देश के 62% जो युवा है, उन युवाओं के भेजे में सपने ही देखना, वो सपने ही नहीं है, सपने खत्म हो गए। क्योंकि सोशल मीडिया में रील्स, गुमराह और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो हजारों सैकड़ों करोड़ बीजेपी और आरएसएस द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, उसकी वजह से सुबह से शाम तक वो यही नफरत देखता है। और इसकी वजह से उनके घर वाले डरे हुए हैं, मेरे जैसे युवा डरे हुए हैं। और ये डर खत्म होना चाहिए। अगर ये डर खत्म होना है तो लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। इसलिए सड़कों पर आना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई लोगों के मांग के लिए जन आंदोलन उभा किया जाता है, खड़ा किया जाता है, उस वक्त उसको कुचल दिया जा रहा है। जैसे जेएनयू की बात, बड़े सालों के बाद, मुझे पत्रकारिता में ना जाने कितने साल हो गए हैं, बड़े सालों के बाद बहुत अच्छा लगा कि किसी ने राम मनोहर लोहिया जी का नाम लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। शुक्रिया। Somebody remembers लोहिया जी, Yes. amazing। प्रदीप सर जी, सर मुझे देखो, एमवीए बजाज साहब कह रहे थे सी वोटर, जो उनका प्रोजेक्शन है कि एमवीए साथ में लड़ेगा तो दे विल विन पूरे लोकसभा 2024 महाराष्ट्र में एमवीए का होगा। मगर संजय राउत जी का जो बयान था आजकल में, उन्होंने कहा कि नाना पटोले इज रिस्पॉन्सिबल कि हमारा सरकार गिर गया, शिवसेना उद्धव सेना गिर गया। नाना पटोले जी अगर इस्तीफा नहीं देते चेयरमैनशिप से तो शायद हमारा सरकार नहीं गिरता। एंड तो ये कैसे देखते हो? क्या ये बीएमसी में ये शिवसेना नहीं चाहती कि कांग्रेस के साथ युति हो? क्या इसका इंडिकेशन है? उसका मतलब जो है थोड़ा सा अलग है, जो शब्द है उससे थोड़ा मतलब अलग है। वो जैसे कहते हैं ना कि नाना पटोले जी की कार्यक्षमता के ऊपर वो बोल रहे हैं कि वो इतने कार्यक्षम नेता है कि वो अगर वहां पे होते तो वो बीजेपी ने जो भी कांड किया, जो सट्टा बाजार, घोड़े बाजार जिसको कहते हैं, वो जो किया वो होने नहीं देते। उतनी क्षमता, उतनी ताकत नाना पटोले जी में है, उनका ऐसा कहना था। वो उस पर्सपेक्टिव में कह रहे थे। लेकिन पार्टी की धुरा संभालने के लिए, पार्टी को राज्य में मजबूत करने के लिए नाना पटोले जैसे फायर ब्रांड नेता की जरूरत यहाँ पे थी। और पार्टी ने उनके ऊपर जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने उस पद का त्याग कर दिया और प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो संजय राउत जी का कहना उनको जिम्मेदार ठहराना नहीं था, तो उनका ये कहना था कि ऐसा कार्यक्षम आदमी वहां पे अध्यक्ष के नाम पे बैठा होता, उस कुर्सी पे होता, तो एकनाथ शिंदे जी हो या उनके पीछे के जो मास्टर माइंड है वो देवेंद्र फडणवीस जी हो, या दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति उन्होंने जो कहा था वो मोदी जी हो, वो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कुछ वो करने में असफल होते, ऐसा उनका कहना था। और महाविकास आघाड़ी नहीं लड़ेगी। नाना पटोले जी ने आगे जाके ये भी कहा कि मैं तो ठीक हूं, आप ये प्रशंसा मेरा कर रहे हो, आई टेक इट, बट आपको दिख नहीं रहा था कि आपका पार्टी गिर रहे, टूट रहे, बिगड़ रहे। तो उसके लिए नहीं, तो देखो तो हमारा ये है कि क्या मोदी जी आज आए, मुंबई में दूसरी बार आए पिछले ये महीने के अंदर, तो इसके संकेत यह है कि बीएमसी चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। बीएमसी चुनाव होने वाला है जी। तो हाँ। शिव से एमवीए होगा। एमवीए अगर लड़ता है एक साथ तो जीत निश्चित है। बट शिवसेना, अगर बहुत सारे कांग्रेस के हमारे स्पोक्समैन आए थे इस मंच पर, उन्होंने कहा कि हमको शायद शिवसेना के साथ या गठबंधन में उतना सीट नहीं मिलेगा जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, बिकॉज उद्धव सेना ज्यादा सीट मांगने वाले हैं। तो क्या संजय राउत का यह संकेत था कि अभी बीएमसी में हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, कांग्रेस को भी थोड़ा दरकिनार करना? नहीं, क्या लगते हो आपको? अभी संजय राउत जी रोजाना सुर्खियों में रहते हैं, उनके बहुत से बयान भी आते हैं।
और मुझे उनके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं एक जिम्मेदारी के साथ एक बात कहूंगा कि महाविकास आघाड़ी के जो वरिष्ठ नेता है, जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जी वो सभी नेता इस बात पर सहमत है, एकमत है कि बीजेपी के खिलाफ इन तीनों को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए, और वो लड़ भी रहे हैं। जैसे कि मैंने बायपोल्स और विधान परिषद इन दोनों का यहाँ पे दाखिला दिया है, और महाविकास आघाड़ी बीएमसी में भी साथ में ही लड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है जहां तक है। और ये लगने की बात नहीं, उसी But that will be the most तरह से logical यहाँ thing, पे very रणनीति में frankly. चल रहे हैं। जी गाड़े हाँ। साहब, that will be the most logical thing. सबसे लॉजिकल बात तो वही बनती है कि अगर आप लोग इकट्ठे लड़े हैं तो यू विल बी एबल टू प्रेजेंट द यूनाइटेड फ्रंट। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात जो सामने आती है, अगर आप तीनों इकट्ठे भी लड़ पड़े, मतलब आपके नेता अशोक चौहान जी हैं, एनसीपी के नेता हैं हमारे आदरणीय अजीत दादा पवार और शरद पवार जी तो खैर शरद सबसे पवार बड़े जी नेता हैं, जी हैं हाँ। यहाँ पे, और उद्धव ठाकरे जी, अगर ये सब लोग इकट्ठे लड़ते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, लड़ते हैं बीएमसी में। लेकिन बीएमसी में समस्या यहाँ पर यह आती है कि बीएमसी के सबसे ज्यादा लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल इश्यूज के ऊपर ज्यादातर बीएमसी लड़ी जाती है। यहां पर कांग्रेस का अब तक कोई प्लान क्या है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए सबको मालूम है बीजेपी और शिंदे सेना क्या करने वाली, वो पॉइंट आउट करेगी हमने कोस्टल रोड बनाई, वो क्या है ट्रांस हार्बर लिंक बनाया, मेट्रो की 12 लाइन दे दी, नए नए फ्लाईओवर हम लोगों ने इनॉग्रेट किए, उसके अलावा जो गोरेगांव मुलुंड का जो कनेक्टर है वो है, आगे जाकर के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, और ना जाने क्या कुछ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जिसमें और वंदे भारत ट्रेन उसके बारे में भी बात करेंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, 200 यूनिट फ्री में बिजली के, एजुकेशन फ्री, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री, मेडिकल केयर फ्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर रेवड़ी मुझे भी बहुत पसंद है सर, मैं खाता हूँ रेवड़ी। अब मुझे मालूम नहीं आप खाते हैं कि नहीं, मूंगफली और रेवड़ी दोनों चीजें बहुत बहुत पसंद है, सिंगदाना और रेवड़ी। लेकिन कांग्रेस का क्या है, what is the alternative that the Congress is presenting? What is your alternative model, sir, for Mumbai? महाविकास, बिल्कुल बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी हम साथ में लड़ेंगे, एक तो बात यह है। अभी तक कांग्रेस का भी वही फैसला है, और कांग्रेस का क्या मॉडल है, और शिंदे क्या कहेंगे, फडणवीस क्या कहेंगे, बीजेपी क्या कहेगी, ये सब बातें जो आपने कही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम इतिहास में जाते हैं, इतिहास में झांक के देखते हैं, तो इस मुंबई का जो मॉडर्न फेस है, मॉडर्न चेहरा है, वो कांग्रेस ने खड़ा किया है, कांग्रेस ने बनाया है, और ये इतिहास के पन्नों से कोई मिटा नहीं सकता। तो कांग्रेस का यही है कि कांग्रेस हमेशा जो डेवलपमेंट है उसकी कभी एडवर्टाइजमेंट अभी तक तो हमने की नहीं है। अभी मोदी जी से कुछ सीखना पड़ेगा कि काम मत करो, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करो। लेकिन ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूं कि कांग्रेस का जो मॉडल है वही रहेगा कि यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के साथ हम लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मॉडल रहेगा जिसको हम सस्टेनेबल और सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, वो मुंबई में बने। यहाँ पे झोपड़पट्टी का जो मसला है, शिंदे सरकार आने के बाद उन्होंने पहले के एक बिल्डर, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कुछ तो 7,000 करोड़ रुपए का वहां पे भरा था, अभी वो कोर्ट में भी चले गए हैं। लेकिन 5,000 करोड़ में उन्होंने अडानी को बेच दिया, क्योंकि ये तो अडानी के गुलाम है, ये सभी लोग अडानी के दलाल लोग हैं, गुलाम लोग हैं। तो हम पहले तो ये किसी बिल्डर को कमीशन खाने के लिए मुंबई को बेचेंगे नहीं, और मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, देश का नहीं, तो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सिटी है। तो यहाँ जितना हो सके रास्ते, यहाँ पे जो भी रास्ते हैं वो पक्के कैसे बने, जो हर साल बारिश में जो गड्ढों की यहाँ पे जो मुसीबत होती है वो ना आए। शिक्षा का जो मुद्दा है, मैं उसी पे आने वाला हूँ कि शिक्षा जो है यहाँ पे अभी असर का रिपोर्ट आया है, मैं उस पे आप सभी का ध्यान देना चाहूंगा कि मैं उस पे ऊपर काम कर रहा हूँ अभी गांव में जाके। तो 53% जो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे पूरे इंडिया के, वो उनकी मातृभाषा में पढ़ नहीं सकते। दुरुस्त बात, ये सच्चाई असर ने बताई है जी। और मैं उससे भी ऊपर जाके कहता हूं कि महाराष्ट्र के मुंबई छोड़ के जो भी जिला परिषद है, जो मैं कॉर्पोरेशन स्कूल की नहीं बात कर रहा हूं, जिला परिषद की, वहां पे 60 to 70% बच्चों को मदर टंग में उनकी किताब वो पढ़ नहीं सकते।
ये सच्चाई है और मैं हर रोज ये देख रहा हूं। ठीक है, मैं मुंबई के ऊपर आता हूं, तो शिक्षा, ऊर्जा, सांस्कृतिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट और इन सभी मुद्दों को लेके महाविकास आघाड़ी एक हमारा जाहिरनामा वहां पे तैयार करेगी और हम मिल के बात करेंगे और इनमें हम जाति, धर्म ये देख के यहाँ का डेवलपमेंट नहीं करेंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, मोदी जी यहाँ पे 20 दिन में जो 2 बार आए हैं, तो ये मुंबई के ऊपर कुछ लोगों का बहुत बहुत सालों से नजर है कि इसको एक तो अपने स्टेट में ले आए, वरना इसको हम महाराष्ट्र से अलग कर दें। ये भी यहाँ पे चल रहा है, तो ऐसी राजनीति को हम सफल नहीं होने देंगे। राइट। तो गाड़ी साहब, एक चीज है कि बीएमसी बजट को आप कैसे देखते हो? बिकॉज कांग्रेस के अलग अलग स्पोक्समैन ने कहा कि ये बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ही नहीं। ये बजट, ये जो बीएमसी के बजट है, ये कॉन्ट्रैक्टरदारों का बजट है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स को फेयर करने वाला बजट है। उनका कहना है कि एजुकेशन, जो आपने एजुकेशन लिया था अभी, कहा कि एजुकेशन, उसमें बजट बहुत कम कर दिया। मैं देख रहा हूं कि आपका एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट है और इस सेक्शन में, तो एजुकेशन के लिए बजट बहुत कम है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ है ही नहीं, 50 लाख पूरे बजट है पूरे स्पोर्ट्स के मुंबई के। तो मुंबई के बच्चे और बीएमसी में कौन से उपलब्धि होने वाला है 50 लाख में? तो बीएमसी का बजट, और जो राहुल गांधी ने बार बार मोदी जी से पूछा पार्लियामेंट में कि आपने प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और फार्मर्स को दुगना इनकम करना, इस चीज पे आपने कुछ नहीं किया। तो बीएमसी में आप कैसे देखते हो इस बजट को? आया राहुल जी का जो भाषण था पार्लियामेंट में। मैं बीएमसी के बजट से ज्यादा देश के बजट पे जो आपने पूछा उसके ऊपर पहले बोलना चाहूंगा कि है क्या बजट में। इस बजट में मैंने कुछ एक कार्टून देखा था कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं नफरत मिटाने के लिए, और लोगों को कर रहे हैं कि भाई डरो मत। उसको काउंटर करने के लिए अभी लोग जब राहुल जी के पीछे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए मिडिल क्लास फैमिलीज को अट्रैक्ट करने के लिए, चलो मिडिल क्लास फैमिली जोड़ो बजट है ये, लेकिन उसमें से भी क्या हाथ लगने वाला है? क्या है? शिक्षा का बजट कम हुआ है, हेल्थ का बजट कम हुआ है, उसके साथ ही इस बजट में जो किसानों के ऊपर जो सब्सिडीज दी जाती है, जैसे कि मैं किसान का बेटा हूं, यूरिया के ऊपर जो यूपीए के यूरिया, जो एक एग्जांपल दे रहा हूं, यूरिया के ऊपर जो सब्सिडी यूपीए के गवर्नमेंट में थी वो इस गवर्नमेंट में नहीं है। यूरिया का जो हम 360 रुपए को एक गोनी लेते थे, उसी की कीमत अभी 1000-1200 रुपए बढ़ गई है। तो मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। उन्होंने अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन वो वादे से किसान की आय खत्म करके उन्होंने व्यापारियों की आय दुगनी कर दी, और किसान का जो बुनाई का खर्चा है उसको दुगना कर दिया और आय कम कर दी। आय दुगनी कम कर दी और बुनाई का खर्चा दुगना बढ़ा दिया है। तो ऐसे मोदी जी है। अभी दूसरी बात ये जो है कि जो यहाँ पे कर्ज माफी का जो बात है, इस बजट में राहुल जी ने मांग की थी कि किसानों की पूरी कर्ज माफी की जाए, क्योंकि मोदी जी उनके दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं ना हर साल। आंकड़े भी है, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मेरे नहीं। हर साल वहां पे अडानी जी का, अंबानी जी का, और जो यादी है उनके पास जो लिस्ट है, उनके लोन, उनके कर्जे माफ किए जाते हैं। और जिस किसान के ऊपर उनका वोट लेके उन भोले किसानों को धर्म के राजनीति में गुमराह करके मोदी जी पिछले 9 साल से देश को लूट के अडानी की झोली भर रहे हैं, उनका कर्जा क्यों माफ नहीं कर सकते भाई? उनके ऊपर इस बजट में क्यों नहीं है? रेलवे में क्या है? इस देश में छोटे छोटे कोनों तक कांग्रेस ने रेलवे पहुंचा दी, लेकिन कांग्रेस ने उसकी कभी बड़ी बड़ी ऐड नहीं की। आज कौन सा भी अखबार, आप कौन से भी स्टेट में रहते हो, कौन सी भी सिटी में रहते हो, कौन सा भी अखबार उठा के देख लीजिए, मोदी जी का फोटोशूट किया वाला बड़ा सा फोटो आपको पहले, दूसरे और लास्ट पन्ने में दिखाई देगा। किसका पैसा है? एक वंदे भारत ट्रेन आपने चालू कर दी, क्या तीर मार दिया आपने? क्या बुलेट ट्रेन कर दी तो क्या तीर मार दिया? इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, इस देश को गैस देना। मैं आपके मुद्दे पे आना चाहूंगा, इतना मुझे कंप्लीट करना है। राहुल जी के भाषण को जवाब देते वक्त मोदी जी ने कहा कि हमने जनता को ये दे दिया, वो दे दिया। तो आपने क्या ऐसा नहीं किया है? आपकी ड्यूटी है, आप नौकर है जनता के, हमने चुन के आपको उसी लिए दिया है, तो जनता को ये देना आपकी ड्यूटी है। लेकिन ये जनता को संसद से धमका रहे हैं कि हमने आपको मुफ्त का अनाज दे दिया है, तो आप हमारे खिलाफ मत बोलो। ये राहुल अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं राहुल जी, तो मैंने आपको मुफ्त का अनाज दे दिया है ना,
तो ये रिश्वतखोर देश का नेता जो है, ये रिश्वतखोर प्रधानमंत्री इस देश को बेच रहा है और अभी थोड़ा सा बचा है। और इसीलिए मैं आपके इस माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अगर ये दिया है तो कुछ इस लोगों के ऊपर एहसान नहीं किया है, उनकी ड्यूटी है हमारे सवालों को जवाब देने की और हमारी मांगे पूरी करने की उनकी ड्यूटी है, इसलिए उनको चुना है। और वो भी कहते हैं ना खुद को प्रधान सेवक है, चौकीदार है, लेकिन चौकीदार ने चौकीदारी करते करते LIC को अडानी में इन्वेस्ट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया चले गए और SBI ने 1 अरब करोड़ का उनको लोन दे दिया, फिर बांग्लादेश चले गए और 1500 वैट बिजली का उनको अडानी को मिल गया। तो ये जो भी नाता है वो लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन फिर से मैं आप दोनों पत्रकारों का ये अभिनंदन इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे आपके मुंह पे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मीडिया के ऊपर मोदी जी का भाषण करारा जवाब के नाम से दिखाया जा रहा है, जहां पे करारा जवाब नहीं डरपोकगिरी है। लेकिन इस मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज गाड़ी साहब, आपने जो बात कही है वो कांग्रेस का व्यू है और बहुत लोगों का ये भी विचारधारा है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 2014 से लेकर के अब 2023 में हम लोग हैं और प्रधानमंत्री जी ने कभी भी कोई प्रेस वार्ता नहीं ली, मैं उसी पे आने वाला था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। ये बात ठीक है। लेकिन जो किसानों का मुद्दा आपने कहा उसके ऊपर मैं जरा सा आपसे चाहूंगा एक मिनट, क्योंकि मुझे लगता है इसमें आपकी जरा डीप स्टडी है। इसके लिए आपसे पूछना चाहते हैं, पहली मर्तबा तकरीबन 63,000 करोड़ 63,000 करोड़ वर रिटन ऑफ बाय द यूपीए गवर्नमेंट। चिदम्बरम साहब वर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था, 63,000 करोड़ वर रिटन ऑफ, उनका भाई जो लोन है आपके माफ हो गए। लेकिन मुद्दा यह निकला कि जितने कोऑपरेटिव बैंक थे उन सब लोगों के माध्यम से यह सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना था या लोन माफी होनी थी। बैंक्स ने अपनी बुक्स को बैलेंस कर दिया, जीरो बैलेंस दिखा दिया, वहां पे किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ। और वो कोऑपरेटिव बैंक्स किसके थे? ज्यादातर महाराष्ट्र में जो एनसीपी के बड़े दिग्गज नेता हैं उनके थे, जिसकी वजह से ये, बाय द वे, दिस वाज माय कंक्लूजन एट दैट टाइम एंड वी सेड इट आल्सो ऑन एयर ऑन टेलीविजन दैट द कांग्रेस इज गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज द एनसीपी इज गोइंग टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। नाउ जहां तक आपका प्रश्न है, आखिरकार अगर कर्ज माफी भी करते हैं फार्मर्स की, तो कर्ज माफी से फायदा असल में होगा किसको होगा बताएं? नहीं, वहां पे आपने जो मुद्दा कहा है उसमें 2 बातें हैं। एक थोड़ी सच्चाई है और आधा बीजेपी का प्रोपेगेंडा जो सभी तरफ जाता है। और हम बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं है साहब, आपके जो नेता थे यहां से, जिसको राज्यसभा की टिकट आपने दी, उसके बाद वो MRCC के प्रेसिडेंट बने, आजकल नहीं है लेकिन फिर भी कांग्रेस में हैं। आदरणीय संजय निरुपम जी ने यही चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी जी को कि ये होने वाला है। मैं आप ही के नेता को कोट कर रहा हूं साहब, बोलिए। बराबर है। हाँ, लेकिन किसानों का फायदा हुआ है और बहुत सारे किसानों ने भी उस वक्त कहा था, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, और उसमें जो एक क्लॉज था कि 2 हेक्टर के नीचे वाले जो भी किसान हैं उन सभी का जो कर्जा था वो माफ किया गया था। तो उन लोगों को वहां पे राहत मिली है, उनका कर्जा माफ हुआ है। और कोऑपरेटिव बैंक की अगर आप बात करते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो किसानों के लिए लोकशाही प्रक्रिया, लोकशाही प्रणाली के माध्यम से खड़े किए बैंक है। वो किसानों के बैंक है जी, वो लोगों के बैंक है। तो वो बैंक अगर कर्जे में होते हैं तो कर्जा भी किसानों को ही दिया जाता है, समझ गए? लेकिन शिवसेना उद्धव सेना के नेता हैं किशोर तिवारी जी। एक मिनट, मैं एक बात, कोऑपरेटिव ये शब्द यहाँ पे आया है तो उसके ऊपर एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि इसी कोऑपरेटिव सेक्टर से इस देश के किसानों को, दूध उत्पादताओं को, यहाँ की कांग्रेस और बहुत सारे ऐसे जो पार्टियां हैं जो संस्थात्मक उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है वो राहत देती थी। लेकिन तो आपकी गलती है, बीजेपी ने तय किया कि कोऑपरेटिव सेक्टर हमें बर्बाद करना है। गाड़े साहब इसमें गलती किसकी? आपकी है, FCC लाई है। हाँ। गाड़े साहब इसमें गलती कांग्रेस की है, सीधी बात है। आप लोगों ने अपने बारे में ना इश्तिहार दिए, ना विज्ञापन दिए,
ना शोर मचाया, ना ढोल बजाया, ना डमरू बजाया, ना बहुत बड़ा वो जो ड्रम होता है वो बजाया। अगर आप भाई जमाना बदल गया है, आपको भी इश्तिहार देने चाहिए, आपको भी हर एक मीडिया चैनल के अंदर बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देने चाहिए। चलते चलते सर चलते चलते जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा सर, उसका तो जवाब दे दें। ये 52,000 करोड़ का जो बीएमसी का बजट है, ये कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर बजट है। इसके ऊपर जरा बताएं। तो अभी जो सरकार जो है वही सरकार कॉन्ट्रैक्टर लोगों की मैं सीधा कहूंगा, मैं किसी के बाप से डरता नहीं, ये उनके ब्रोकर्स है, ये उनके दलाली करते हैं। तो ये बजट जो है बीएमसी जो है वो सोने की मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहा जाता है देश भर में, और यहाँ पे दुनिया भर से लोग अपना पेट भरने के लिए आते हैं। तो ये जो 52,000 करोड़ का जो बजट है वो ठेकेदारों के लिए है, उसमें शिक्षा हो, बुनियादी जो भी फैसिलिटीज हो फंड उसके लिए, या फिर डेवलपमेंट के लिए कोई भी भरीव तरतूद नहीं की गई है, ना ही कोई निवेश है, ना ही कोई विजन है। वो पूरा का पूरा ठेकेदारों के लिए है। इस साल वो टेंडर निकालेंगे, थोड़ा फार खर्चा करेंगे और कमीशन लेके, कौन कमीशन लेने वाला है वही कमीशन लेंगे। उन्हीं के फायदे की ये जो बजट है उन्हीं के फायदे की है। जिन लोगों ने उस दिन कहा कि ये बजट बहुत अच्छा है, उन्हीं के फायदे की है, उन्हीं के ठेकेदार इस पे जिएंगे। लोगों का पैसा उनके ऊपर उड़ाया जाएगा और विकास पे नाम पे फिर से जुमला बेचा जाएगा। गाड़े साहब, यू हैव डन अ फैंटास्टिक। आपका जो रिप्लाई था इट वाज अमेजिंग, आपका जो स्टडी है इट इज फैंटास्टिक। बट फिर बैक टू मोदी जी स्टेटमेंट, बोले कि आप ठीक बोल रहे हो बट आपका सुनेगा कौन? मैंने पीएम किसान में 11 करोड़ लोगों को फैसिलिटी दिया है, 3 करोड़ लोगों को घर दिया है, गैस फ्री 9 करोड़ लोगों को दिया है, टॉयलेट 11 करोड़ लोगों को बना के दिया है, आयुष्मान में 2 करोड़ लोगों फैमिलीज को हमने अकोमोडेट किया है। मैंने इतने गरीब लोगों को लिए किया और मोदी जी छाती थक के बोल रहे थे, ठोक के बोल रहे थे, आपका कौन सुनेगा? क्या ये लोग आपका सुनेगा? गाड़े साहब को पानी पीने की जरूरत पड़ गई, मतलब जवाब देने के पहले। जी बोलिए सर, इस मुद्दे पे मैंने थोड़ा सा पहले बोला है जी, बताया मोदी जी ने अगर ये दिया है तो उन्होंने कुछ एहसान नहीं किया है, उनके बाप के घर से उन्होंने दिया है। वो तो फकीर है, बराबर की नहीं, और फकीर इतना नहीं दे सकता, तो उन्होंने जनता की जेब में से उनको थोड़ा सा दिया है। तो उसी के साथ मोदी जी को ने ये भी कहना चाहिए कि 45 साल की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट आपने इस देश में खड़ी की है। मोदी जी को यह भी कहना चाहिए कि पिछले 70 साल का सबसे बड़ा कम्युनल इशू आपने किया है। मोदी जी को यह भी उस लिस्ट में गिनवाना चाहिए कि कतार जैसा छोटा सा देश आपकी इज्जत उतार रहा है और आप चुप बैठे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री चुप है, ये भी मोदी जी को बताना चाहिए। मोदी जी को यह भी बताना चाहिए कि उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से जो सिलेंडर और सेगड़ियां दी गई है वो अभी कबाड़े में पड़ी हुई है और वो महिलाएं अभी गैस खरीदने उतनी भी कमाती नहीं है, ये भी मोदी जी को कहना चाहिए। मोदी जी को यह भी कहना चाहिए कि जब भारत के किसान का प्याज महंगा हो जाता है, महंगा बिकने लगता है, तो वो देख नहीं पाते और पाकिस्तान से वो प्याज यहाँ पे ले आते हैं। तो ये मोदी जी कभी बताते नहीं है। पाकिस्तान से ट्रेड बंद है। फिलहाल गाड़े साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आगे जाकर के बहुत और भी मजा आएगा आपसे बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बतौर कांग्रेस प्रवक्ता के नाते आप हमारे शो में आते रहेंगे, हमारे चैनल पर आते रहेंगे। बिल्कुल सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैं आपको शुभकामना और धन्यवाद दोनों फिर से लास्ट में दे दूंगा। बस हम मिल के काम करेंगे, हम भी चूकते हैं। मैं एक इतिहास की बात बताना चाहूंगा, उस पत्रकार का मुझे नाम अभी याद नहीं है, और 2 बातें मुझे कहनी है लास्ट में। जो लोग कहते हैं, जो शिंदे और फडणवीस कि शिवसेना ने कांग्रेस के जाके देशद्रोह किया है और बाला साहब होते तो ये उनको, उद्धव ठाकरे को माफ नहीं करते, उन लोगों के लिए एक इतिहास बताना चाहूंगा। जब देवराज अर्श कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अर्श कांग्रेस निर्माण की थी, आप लोगों को पता होगा, आपकी उम्र है, आपका तजुर्बा है, तो उस वक्त महाराष्ट्र में इंदिरा कांग्रेस के साथ बाला साहब ठाकरे ने सरकार बनाई थी। ये इतिहास है, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि
इस देश में अगर हम भी चूकते हैं तो आप हमें भी इस माध्यम से जरूर आपकी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक हमारी भी गलतियां पहुंचाए, क्योंकि हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम उस गांधी नेहरू जी के हम अनुयायी है, उनके कार्यकर्ता है कि हमारी गलती होती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, और नेहरू जी भी वो करते थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार और वंदे मातरम। Thank you so much. That's it. That's all we've got for you. Very, very Tonight's show. articulate. Very articulate, Mr. Gary. Very articulate gentleman from the Congress after a long, long time. Yes. That was nice. That was really and truly nice. Even though I don't agree with him on so many subjects, but that's okay. Disagreement is a part of democracy. It, in fact, is the only part of democracy. Democracy, by the way, means disagreement. Dictatorship is agreement. Democracy encourages disagreement. That's it. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आज के Nation Now में प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.